Hey guys, welcome to BNB Experts. Today we are back with a new strategy, and this is strategy we'll be working on the stock market, and this is for the intraday. Last we have shared a strategy on crude oil, and that strategy is doing very well. You can subscribe this channel and follow my strategies. See, we will come back with the strategies which are well tested and well. Uh, I mean, doing well performance and right. So there is a small disclaimer: these strategies are based on the personal research, and you are therefore requested to do a back testing before you adopt this strategy. And if you are confident, if you are basically you are strict about working in a stock market, and you know how to work in a stock market, because it takes a lot of patience in the patience on working in a stock market. So basically, if you have such patience with you, then only you should get into a stock market and start working on a strategy. These strategies requires a lot of patience, and once you basically set your target and set your stop loss, I would just recommend you not to look at your charts. Just open your look for new trades, and forget the past trades which you have done. I'm sure if you stick to the rules regulations, you're going to make good money out of it. And a stock market is a place wherein if you are having a good patience, and if you are you have eye to key details, then you can make good money out of this stock market. People say that it is a stock market is gambling. It is not gambling. It is experience, it is observation, and it is basically strictness with your trades. It is just like any other business you do, right? And the best strategy to work in a stock market is price action. So all should work on price action rather. All right. So there is this disclaimer I have already told that this is completely your call. You want to adopt this strategy, please understand the strategy and then only adopt it, and do your back testing before you get into this strategy. Don't do anything as such which can affect your basically uh, money, because it is your hard earned money. And don't adopt any strategies which you have not understood and you're not confident working on. All right, so here we will start the strategy. This is strategies for the stock market, intraday traders. This is not for the beginners, and beginners should not watch this video, because if they do so, they will waste their time, right? And this strategy is basically, I will name it, this is a like a this is basically, I will say, I will name it like confirmed arrow strategy. This is a confirmed arrow strategy, I will say, right? So whenever I will just talk about this strategy in a minute. So basically, in this strategy, you'll have to, I'm using a Zerodha chart. You can use any chart which are available online. You can go to investing.com or money control and look into their charts. The formation you have to follow is basically 15-minute candle chart, and that's it. You don't have to use any indicators, don't have to see anything. You just have to put a 15-minute candle chart, right? So as soon as your day starts, so today is 7th of March, I'm not including today's date. If you include I will talk about starting 6th of March, 5th March and 1st March, and then 20th of February I will speak about. Okay, so here we go. Here's the strategy. All right, so basically you'll have to look for a confirmed arrow pattern, right? You can see on the screen I have circled a few arrows, and this is the Bajaj Finserv stock I'm exploring at the moment. So going to 6th of March, you can see you'll have to look for this pattern, one candle, and then the second candle breaking it's down or up, and then the third candle breaking the second candle up or down. Okay, so this is your formation. Okay, जो पहला कैंडल है
उसके बाद वाला जो कैंडल है वो पहले का कैंडल का अप या डाउन तोड़ते हुए एक लाइन नीचे बनाए, नीचे तक जाए। क्लोज कहाँ हो रहा है उससे मतलब नहीं है, कलर क्या है कैंडल का उससे कोई मतलब नहीं है, राइट? देयर इज नो, आई मीन, the color of the candle doesn't make any difference, and the closing and opening doesn't makes any difference. Okay, so if you see, this is a confirmed arrow kind of pattern. Now when this pattern is made, you have to basically select the higher limit of this pattern and the lower limit. So in this case the higher limit is basically 6549, and the lower limit is basically 6518. Now see if you see the stock price is very high, 65, it is trading at 6544 rupees. I will not consider point 45 or point 35. I will only consider like if it's the highest point in this candle was 6549 0.85. I will only consider 6549. I will not consider 0.85. I will consider 6549, and the lowest point I will consider 6521. All right. So then what is your target? So basically in this pattern you'll have to look for the smallest candle. So here we get this green candle as the smallest candle, and the range of this candle, the high and the bottom, is your target. Okay, so you will put a buy order above this highest point here, and you will put a sell order below this, and the range is of this green candle, which is the smallest candle in this pattern, जो कि इस pattern में सबसे छोटी candle है, वही आपका range है. So you'll have to put a buy above here, because this is higher than this, slightly higher than this. So you'll have to put a buy above this, and you see that you have achieved your target in the next. Your target got hit in the second order itself, second candle itself, and then it went up and it gave you your target, right? Before this, in the same day, इसी दिन में आपको एक पैटर्न यहाँ पे मिलता है, and you put a buy order here and a sell order here. You see that your target is achieved here. Similarly आपको यहाँ पे भी मिलता है, तो यहाँ पे भी आपका जो smallest candle है, this is the red one. The red one is the smallest candle here. So you put a buy order here, and you see that this range is achieved here. All right. So similarly, if we come back to 5th of March, we see this pattern here, right? This candle breaking this candle's lowest point, and then this candle breaking this candle's highest point. Okay, so this is an arrow kind of pattern. You have to take this candle as the range of this candle's range as your target, and you'll put a sell order here and a buy order here, and you see that your target is achieved. Similarly here you're getting the similar kind of pattern. This is a very small thing here. I think you make your stop loss hit, so don't worry, the stop losses will hit. Actually, stop loss, the purpose of making a stop loss is that it should minimize the losses. So here you see that the pattern is made again, and then here you see that your target of this candle, which was only 8 rupees, 8 rupees was achieved easily out here, right? So similarly in all these candles you see that your patterns, the pattern formation is there, and whenever you put a buy or a sell order, and you put your target as the range of the smallest candle, you see that your target is achieved. In most of the cases, in 90% cases, you will see the target is achieved. See, guys, there is no any strategy in the market which will give you 100% of your targets. There is no such strategy. You never know where the stock market will go. ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर जो आपको रोज 100% पैसा बना के देगी. कोई स्ट्रैटेजी नहीं. अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं. स्टॉक मार्केट इज नॉट अ प्ले ऑफ वन पर्सन. स्टॉक मार्केट इज बेसिकली देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल वर्किंग एट अ सिमिलर टाइम इन अ सिमिलर स्टॉक at the different lots. So you never know where the stock will go, but you can at least follow the pattern, because these patterns are made on basis the sentiments. So this green pattern is made. Why is this green candle here? Because the computer thought, the artificial brain of this system thought that there are too many orders and people are buying, so it went up, right?
So this is a formation you have to basically, it came down, then uh, make a low, and then it broke that the higher of the first candle, and then it went up. So this is a formation actually, right? This is not some ये कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन बिना लॉजिक का नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ. दिस इज नॉट एन ऑब्जर्वेशन विदाउट एनी लॉजिक विच आई एम टेलिंग यू. देयर इज अ लॉजिक इन दिस ऑब्जर्वेशन. So basically, whenever this pattern is formed, you will get your target. The observation about this basically about this pattern is that you'll have to follow the smallest candle in this pattern. Okay, and now I'll show you that I have basically noted down it on an Excel sheet. So I'll show you that. Okay. So here you see that 6-month Bajaj Finserv, if you work with 100 shares lot, you get 24 points. So 2400 you have made, then 2500 you have made, then 1900 you made in a day. You did 3 trades and you earned 6800 rupees, right? Then 5th March, you made 15 point in the trade 1, then minus 16 you have lost, then 800 in one trade. Okay, so all over, I mean, you've just made 700 rupees in this trade. You can increase the lot size, you can work with 1000 shares also, and then you will have, if you have capital, you can do that. अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप 1000 शेयर से भी काम कर सकते हैं, और 1000 शेयर से जब आप काम करेंगे तो आपका यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगा. सो 2400 की जगह 24000 होगा, 700 की जगह 7000 होगा, या दिन का अगर आप देखेंगे तो आप 68,000 लेके निकल रहे हैं. सो दैट इज अ ह्यूज अमाउंट, बट यू नीड टू हैव ह्यूज kind of capital to work on such trades. And then you should not, जब यहाँ पे 16,000 रुपए का लॉस होगा आपका, तो आपको आपका हर्ट दिल नहीं टूटना चाहिए उस टाइम पे कि मेरा 16,000 रुपए का लॉस हो गया. नो बॉस, कोई मार्केट ऐसा नहीं है जिसमें आपको लॉस नहीं होता. कोई भी, अगर आप कोई बिजनेस भी करेंगे, कन्वेंशनल बिजनेस भी करते हैं, तो उसमें भी आपको कैपिटल लगानी पड़ती है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है, इसमें तो सिर्फ आपने कंप्यूटर खरीदा, एक अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी. कोई कैपिटल कुछ नहीं लगा इसमें आपका, बस आपका दिमाग लगा इसमें और आपका पेशेंस लगा. कमिंग टू दी फर्स्ट मार्च, आपने पहले 9 पॉइंट बनाया, फिर 23 पॉइंट का आपने लॉस किया. फिर अगर आप जैसे लॉस करते हैं, तो अगर आप सोचते हैं कि यार तो लॉस हो गया, अब मैं आज के दिन ट्रेड नहीं करूंगा, तो आप फिर फर्स्ट मार्च के ये 3 ट्रेड छोड़ देते हैं, जो कि आपको मिलते हैं, देते हैं 52 पॉइंट्स. और अगर आप ये 3 ट्रेड नहीं करेंगे तो इस दिन आप -14 पॉइंट बंद करके रह जाएंगे, और आपका ऑल इन ऑल पूरे दिन में लॉस हो जाएगा. राइट, अगर आप सारे ट्रेड्स लेते हैं इस दिन में जितने भी आ रहे हैं, तो ये देखिए आप 3800 रुपीज फिर भी लेके निकल रहे हैं. So the point is that you'll have to be very strict, you'll have to be very firm, you have to be very strong minded person. And then थोड़ा सा लॉस होता है तो अपना दिल मत तोड़िए, उसमें दोबारा लग जाइए. गिर के उठने में जो मजा आता है वो कहीं नहीं आता है. सो मैंने इसका टोटल निकाला है सिर्फ आई थिंक 3 दिन की ट्रेडिंग में. अगर आप 100 लॉट से काम कर रहे हैं, if you're working with 100 shares lot, within 3 days you are earning 11,300 rupees. Tell me guys, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें आप 11,300 रुपये कमा लोगे 3 दिन के अंदर विदाउट डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट. हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो इन्वेस्टमेंट करते हो सकता है आप लाखों में कमाओ, बट विदाउट डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट डूइंग एनी कैपिटल एक्सपेंसेस, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आप 11,300 रुपये कमा लेते हैं? और ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आपको पेशेंस की जरूरत नहीं है. बिजनेस इज पेशेंस, पेशेंस इज बिजनेस. अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो पेशेंस करना चाहिए, आपको झुकना पड़ेगा, उसमें बहुत सारी इसमें दूसरे लोगों के सामने बातें करनी पड़ेंगी. यहाँ पे तो आप अनजान लोगों के साथ ट्रेडिंग करते हैं, यू डू योर ट्रेडिंग विद अननोन पीपल, राइट? समबडी sitting at the corner of any word, this word will buy your shares and you will never know that who is bought your share. जिसको भी आपने बेचा है, आप किससे खरीद रहे हैं, you will never know कि आपने किससे खरीदा शेयर. It is an online system, you just have to log in and then start working quickly. Okay, so यहीं पे अगर आप 1000 लॉट से काम करते, मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको. सी, यहीं पे अगर आप 1000 शेयर से काम करते तो आप 1,13,000 रुपए लेके निकले होते, बट उसके लिए आपको उस लेवल की कैपिटल भी चाहिए. बस यू विल नॉट बी एबल टू वर्क विद सच काइंड ऑफ कैपिटल. एंड मैंने यहाँ पे ये बजाज फिनसर्व इसलिए सेलेक्ट किया है बिकॉज ये जो मोटे शेयर्स होते हैं, दीज आर फैट शेयर्स एंड दे गिव यू अ लॉट ऑफ मूवमेंट इन अ डे इटसेल्फ. तो इनमें जो मूवमेंट होती है ना, वो नॉर्मल मूवमेंट भी अराउंड 20-30-25 पॉइंट की हो जाती है. छोटा शेयर आप लेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-3 रुपए का मूवमेंट देगा, उसमें आपको इतना फायदा नहीं होगा. हाँ, लेकिन ये कि आपके पास कैपिटल कम है, तो आप इफ यू हैव लेसर कैपिटल यू कैन वर्क ऑन स्मॉलर शेयर्स, बट देन योर प्रॉफिट विल आल्सो गो डाउन.
ओके, सो अगर आपके अंदर पेशेंस है, if you think that these strategies are really working, I will recommend you to back test yourself. आप एक पेपर पेन लीजिए और स्टॉक मार्केट का चार्ट खोलिए, 15 मिनट का कैंडल लगाइए, और ये फॉर्मेशन जहां जहां भी आपको पूरे किसी भी स्टॉक में दिस इज स्ट्रेटजी विल वर्क इन एनी स्टॉक, ये किसी भी स्टॉक में काम करेगी, ये ऐसी स्ट्रेटजी है, दिस विल वर्क इन एनी स्टॉक, राइट। आप पेपर पेन लीजिए और नोट डाउन करिए, और पेपर ट्रेडिंग करके आप देखिए कि ये आपको इसमें कितना बेनिफिट हो रहा है। जब आपको लगता है कि इसमें बेनिफिट हो रहा है, देन ओनली यू गेट इनटू दिस स्ट्रेटजी। Alright, so thank you so much. This was the second strategy, and this is a well worked strategy. We have done a lot of research, and we have personally basically we हम जो strategy यहाँ पे share करते हैं, हम उस पर काम भी करते हैं। बहुत सारे traders ऐसे होते हैं जो आपको YouTube पे आएंगे, बताएंगे strategies, but they personally don't uh, uh, फॉलो देयर ओन स्ट्रेटजीज विच दे आर टेलिंग ऑन यूट्यूब। उन अपनी जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनकी, वो खुद की होती हैं, वो उनको कभी शेयर नहीं करते हैं। जो स्ट्रेटजीज कम सक्सेसफुल होती हैं, जिनमें सक्सेसफुल रेट अराउंड 60-70% का होता है, वही बताते हैं आपको। जो 100% या 90% सक्सेसफुल जिसका रेट होता है, सक्सेस रेट होता है, वो उसको अपने पास ही रखते हैं, वो नहीं बताते हैं किसी को, राइट। सो हमारे साथ ऐसा नहीं है। वी विल गिव यू स्ट्रेटजीज which are 90%, which have a 90% success rate, and if you follow these strategy, you will make fortune out of them. ओके, अगर आप ये स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं तो आप फॉर्च्यून बनाते हैं, बहुत सारा पैसा आप यहाँ से बना सकते हैं। 2-3 आपके यूट्यूबर्स हैं विच आई एडमायर एक्चुअली, अगर आप उनको फॉलो कर सकते हैं तो करिए। मैं अभी नाम नहीं लूँगा, एक इंदौर से हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, और उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत मोटिवेशन आता है। आप समझ गए होंगे, अगर आप रेगुलर यूट्यूब पे आते हैं और आप स्टॉक मार्केट की वीडियोस देखते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, और जो उनकी कहानी है, जो उन्होंने यूट्यूब पे शेयर करी है, बताई है, अपने बारे में बताया, दैट ही इज बेसिकली हाउ ही स्ट्रगल्ड थ्रू द स्टॉक मार्केट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, एंड इट टुक हिम अराउंड 8-9 years to get into a profitable kind of बिजनेस। एंड उनका एक कहना है कि भाई प्राइस कहाँ जाएगा किसी को नहीं पता है, एंड ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है, दैट ही इज वेरी ओपन, ही स्पीक्स विद हिज ओपन हार्ट, एंड ही स्पीक्स ट्रूथ अबाउट द स्टॉक मार्केट। कहाँ जाएगा प्राइस, नोबडी नोज, इट इज अ फैक्ट, नोबडी नोज। मार्केट आज सुबह 9 बजे खुला है, 3 बजे कहाँ जाके बंद होगा, नोबडी नोज, नोबडी नोज। इट्स एन एल्गोरिथम, इट्स एन एल्गोरिथम। आजकल तो वेदर का भी पता नहीं चलता, जो सामने की चीज दिखने वाली है फिजिकल है। 1 घंटे पहले बारिश हो रही होगी, आधे घंटे बाद धूप निकली होगी, उसके 2 घंटे बाद बर्फ पड़ रही होगी, शाम तक तूफान आएगा, सब कुछ उड़ जाएगा। सो यू नेवर नो, यू नेवर नो। द स्टॉक मार्केट इज लाइक दिस, इट इज ड्रिवन बाय पीपल, एंड देयर आर बिलियंस ऑफ पीपल वर्किंग ऑन अ स्टॉक मार्केट, जो प्राइस की खींचातानी करते हैं, और वो प्राइस एक्शन ही बेसिकली सब कुछ होता है इसमें। Alright, so guys, please subscribe and click the bell icon so that any next video we'll be sharing, you would be able to receive that, right? Thank you for your support and thank you for your love. आप लोगों ने बहुत हिम्मत बढ़ाई है मेरे पिछले वीडियो में, अभी तक व्यूज बहुत अच्छे आए हैं, बहुत लोगों ने थम्स अप भी दिया है, कुछ एक ने कमेंट्स भी किया है। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आती है, कुछ समझने में या मेरे बोलने में कोई दिक्कत हो गई हो, जो आपको नहीं समझ में आई हो, तो यू कैन प्लीज reply in my comment box and basically type me a comment and then I will reply you back. Thank you so much. Have a great day.